Good evening, everyone. Am I audible? So in today's class, we'll discuss a few points that are related to angulation, then root and canal numbers, right? And some other things that are related to the numbers. So today we'll discuss some MCQs that are related to the numbers, right? So let's start with angulation of the teeth. कभी कभी angulation के बारे में सवाल पूछ लेते हैं, right? So which tooth has maximum facial-lingual angulation or maximum mesiodistal or minimum facial-lingual or minimum mesiodistal, questions like that, right? So let's start with the mesiodistal angulation, right? Mesiodistal. So in case of mesiodistal angulation, the questions would be like same maximum or minimum. So maximum mesiodistal angulation would be of maxillary canine, right? And the minimum, that is the most upright, mesiodistally most upright tooth, would be lower lateral incisor. So most upright would be mandibular lateral incisor. Are you guys connected? Okay. So which is the most mesiodistally upright tooth? It is the mandibular lateral, and most inclined is maxillary canine. Right, now let's see facial-lingually, the facial-lingual inclination. So as far as the facial-lingual inclination is concerned, the most inclined tooth, the most facial-lingually inclined tooth would be again maxillary tooth, right? And it is maxillary central incisor. Maxillary central incisor. And as you can see, all the incisors have a great inclination, right? They are highly inclined facially. So this inclination is not, when we say facial-lingually, what does it mean? Is it facially inclined or is it lingually inclined? It is, the incisors are facially inclined, right? They have a facial inclination, they have a labial inclination. But as you move backwards, as you move posteriorly, as you move distally in mandibular arch, right? In the mandibular arch, the facial inclination decreases and the lingual inclination increases, right? As we move distally, the inclination becomes more lingual, right? The inclination becomes more lingual. So which is the most upright tooth facial-lingually? The most upright teeth facial-lingually are premolars, right? The premolars are the most facial-lingually upright teeth. And as you can see, unlike mesiodistal inclination, where the minimum mesiodistal inclination or the most upright tooth was a mandibular tooth, here the most upright facial-lingual tooth is a maxillary tooth. And it is maxillary first premolar. It has the least facial-lingual inclination. So it is the most upright tooth facial-lingually. So upper fourth तो कैसा है? Facial-lingually most upright. And lower lateral incisor कैसा है? It is mesiodistally most upright, right? अब यहां पर एक कंफ्यूजन आता है कि लोअर फर्स्ट प्रीमोलर, जो लोअर फर्स्ट प्रीमोलर है, why does it have such a less inclination, right? Lower first premolar, they are saying that it has an inclination of just 9 degrees. Now the thing is that the lower first premolar has a crown
which is inclined on its root. Right? It has a crown which is inclined on its root. It has an angulation with its root. तो यहां पर क्या हो रहा है? The crown has an angle with its root, right? So the entire tooth, this entire tooth has an angulation of 9 degrees, whereas this crown has an angulation of approximately 30 degrees on its root, right? So the most inclined, facially most inclined crown is mandibular first premolar, but it is not the most facial-lingually inclined tooth. ठीक है? Facial-lingually inclined crown premolar का है, lower first premolar का, पर tooth नहीं है most inclined, right? Tooth का angulation तो है 9 degrees. Its crown is inclined on its root at an angle of 30 degrees. So the crown is most facial-lingually inclined, but not the tooth. Is it clear? Again, if someone asks you which is the most lingually inclined tooth, तो यहां पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मोस्ट लिंगुअली इंक्लाइन टूथ कौन सा है, राइट? विच इज द मोस्ट lingually inclined tooth. Now we have seen that the most facial-lingually inclined tooth or most facial-lingual angulation जो है, that is of upper central incisor and it is about 28 degrees, right? But then we also know that the upper incisors or for that matter lower incisors are all facially inclined. These are all facially inclined. तो अगर आपने upper one लिख दिया तो that would be wrong, isn't it? What we need to answer is which is the most lingually inclined. तो most lingually inclined tooth कौन सा होगा? In the mandibular arch. As we move distally, the lingual inclination increases. So if at all there is an option, go with lower third molar. If that is not there, go with lower second or lower first molar. So these are the teeth which have maximum lingual inclination. Lower 8 followed by lower 7 followed by lower 6. Right? तो ये कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि फेशियल लिंगुअल इंक्लिनेशन हमें याद रहे कि लोअर अपर सेंट्रल इंसाइजर का मैक्सिमम, बट दे हैव आस्क्ड अबाउट द लिंगुअल इंक्लिनेशन. सो इन दैट केस द आंसर वुड बी लोअर 8 फॉलोड बाय लोअर 7 फॉलोड बाय लोअर 6. ये उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड मोलर हैज मैक्सिमम लिंगुअल इंक्लिनेशन, राइट, फॉलोड बाय द सेकंड मोलर्स फॉलोड बाय फर्स्ट मोलर, राइट. So these diagrams represent the lingual and facial inclinations. So as you can see in the maxillary arch, there is no lingually inclined tooth. There is no lingually inclined tooth in maxillary arch. There is only lingually inclined tooth in mandibular arch, and those are the molars. फिर उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ न्यूमेरिकल बेस हमने देखे अभी. इसके बाद रूट्स के ऊपर टूथ के ऊपर जो प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट्स हैं, let's say this is your maxillary central incisor, this is the maxillary lateral incisor. So where are the proximal contacts located at what level? ठीक है, ये इस टेबल के थ्रू हम देख सकते हैं. अब इसमें हम डिवाइड करेंगे टूथ को 3 पार्ट्स में, 3 parts, or you can just say that we will identify 3 points for the proximal contacts. First is incisal third. Then there is the junction of incisal and middle third, and then there is the middle third. So all the proximal contacts would be in these 3 places. Either it would be in incisal third, or at the junction of middle and incisal third, or in the middle third, right? दूसरा रूल ये है कि mesial contact is always more occlusal. So as compared to the distal contact, the mesial contact is always more occlusal. इसके exceptions हैं कुछ, वो हम यहां देखेंगे, right? So let's start with the maxillary teeth. So central incisor, since this is the most mesial tooth, it will have its contacts in the incisal third or at the junction, right? So the mesial contact is higher, it will be in the incisal third, and the distal contact, which is a bit lower, it would be at the junction. For the lateral incisor, it would be junction at the mesial side, and in the distal side, it would be in the middle third. So from here,
from lateral incisor to second molars, right? Because third molars don't have a distal contact. All the distal contacts are in the middle third, right? All the contacts are in the middle third. तो यहाँ पर कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि distal contacts maxilla में apart from central incisor are all in third, middle third, right? Whereas the mesial contacts they are initially in incisal third, फिर junction, फिर middle third, इस तरीके से चेंज होंगे. तो जो anteriors हैं, anteriors में central incisor का तो हो गया incisal third में, जो बाकी दो anteriors हैं lateral and canine, they will be at the junction of the incisal and middle third, right? So for both lateral and canine, the mesial contacts is in the junction. After that, all the posteriors except for first molar largest होता है, right? First molar is the largest, and that's why it has a different location. Same with would be with the mandibular first molar. तो mandibular first molar और maxillary first molar इन दोनों का ही mesial contact junction पे होगा, right? So as you can see, all the mesial contacts of the posterior teeth in maxillary arch, ये maxillary arch में जितने भी posterior teeth हैं, इन सबका mesial contact भी कहाँ है? middle third में. So it might appear that the mesial and distal contacts in the posteriors are at the same level, but no, they are in the same zone, right? They are in the same zone, that is in the middle third. But the mesial contact is more occlusal, or you can say it is more closer to the junction, right? The mesial contact is closer to the junction, whereas the distal contact is a bit cervical. Clear है? तो this is a bit simple to remember, I guess. ठीक है, तो all the distal contacts in the middle third except for central incisor, which is at the junction, and mesial contacts, all the anteriors, they will be in the incisal third or at the junction. Central incisor is at the incisal third, and the remaining two, that is lateral and canine, they are at the junction. After that, all the posteriors will be in middle third except for maxillary first molar, where the mesial contact is at the junction. Clear? Now, as you can see, the posteriors are more or less same as in maxilla. So all the posteriors have distal contacts in the middle third, and all the posteriors have a mesial contact also in the middle third except for the first molar. तो ये तो maxilla और mandible में almost same ही है. The difference is in the anteriors. Anteriors में हमने देखा था same as in maxilla, it is either in the incisal third or at the junction. But here in mandible, all the mesial contacts in the anteriors are in the incisal third, and the distal contacts for the incisors are in the incisal third, but for the canine is at the junction. तो distal contact एक ही है जो कि junction पे है, वो है canine का, right? इसमें एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये, that the mesial and distal contacts of mandibular central incisor are at the same level. They are at the same level. So this is an exception. जहां की mesial and distal contacts are at the same level. Mesial contact is not higher than the distal contact, and they are at the incisal edge, right? They are at the incisal edge. There is a second exception, which is first premolar. The first premolar, mandibular first premolar, as we have seen in the classes, the mesial marginal ridge is a bit lower, right? It is a bit lower as compared to distal marginal ridge in occlusion. So mesial marginal ridge appears to be a bit cervical. So the mesial contact, the mesial proximal contact is also a bit lower. The mesial contact is lower in lower first premolar. तो लोअर फर्स्ट प्रीमोलर में मीजियल कॉन्टैक्ट डिस्टल कॉन्टैक्ट से लोअर है. सेंट्रल इंसाइजर मैंडिबल में बोथ द कॉन्टैक्ट्स आर एट द सेम लेवल एंड दे आर एट द इंसाइजल एज. सो दीज आर द टू एक्सेप्शंस वेयर मीजियल कॉन्टैक्ट इज नॉट occlusal to the distal contact. Clear? फिर उसके बाद आज किसी ने डाउट पूछा था अबाउट एक्टिव एंड पैसिव इरप्शन, राइट? So what is active eruption and what is passive eruption? Active eruption is that
point is that movement where the tooth from its intra-bony site moves into the occlusion. So from intra-bony site to occlusion, that is the active eruption, right? That is the active eruption. So till the occlusion is established, that is active eruption. Once the occlusion is established, right? Or you can say when the tooth is moving, right? When the tooth is moving, that is active eruption, isn't it? Now let's say this is the tooth which has erupted, right? And let's say this is the gingiva covering the tooth at its initial eruption, right? So when it erupted initially, we know that not the entire crown is visible in oral cavity, isn't it? Some of the crown is beneath the gingiva. So the gingiva is covering some portion of the crown, isn't it? So what happens is that with age, the size of the jaw increases, isn't it? The vertical dimension increases. So to accommodate this vertical dimension, the gingiva also goes apically. The gingiva, it goes apically, revealing more of the crown, right? So gingiva moves apically, so more of the crown is revealed. So more of the crown is revealed. This is passive eruption because the tooth hasn't moved, isn't it? So what happens in passive eruption? What happens in passive eruption? In passive eruption, gingiva moves apically and there is no movement of tooth, right? So the tooth does not move. It is the gingiva that moves apically on the tooth, right? So can you tell me what will happen to the crown to root ratio after passive eruption? So due to passive eruption, what will happen to crown to root ratio? Will it increase? Will it decrease? Or will it remain same? Increase होगा option A, decrease होगा option B, या same रहेगा option C. So what do you think will happen to crown to root ratio? Will it increase? Will it decrease? Or will it remain same? So as you can see, the tooth hasn't undergone any degenerative process, isn't it? कोई यहाँ पर attrition नहीं है, abrasion नहीं है, कुछ भी नहीं है. This is just a normal physiologic process. As you can see here in this picture, initially the entire junctional epithelium is at the enamel, is on enamel, isn't it? Eventually what happens is this junctional epithelium shifts apically. So initially some junctional epithelium would be on the enamel and some would be on root, and then the entire junctional epithelium would shift towards the root, and then later stage, this is the pathologic state. Right, this is stage 4 is the pathologic state where there is actual gingival recession and root portion can be seen above the gingiva, isn't it? So the fourth stage is pathological and these three stages are physiological. These three stages are physiologic, stage 1, 2 and 3. Whereas the stage 4 is pathologic. Is it clear? So what happens to crown to root ratio when after the passive eruption? It will remain same, isn't it? Since the dimension of crown and the dimension of root remains unchanged, therefore the crown to root ratio will remain same. It won't change. It's just that more of the crown can be seen now. Achha, can you tell me what is the difference between anatomic crown and clinical crown, or anatomic root and clinical root? What is the difference between anatomical crown and root or clinical crown and root? So let's say you have a tooth here. Now what is anatomical crown? Anatomical crown is the actual crown portion and anatomical root is the actual root portion.
right? This is the anatomical crown and this is the anatomical root. But what about the clinical crown and root? Let's say this is the crown visible above gingiva, right? This is the crown visible above gingiva. So clinical crown would be that portion which is visible it is the portion, very good Bhavna, it is the portion visible in oral cavity, or you can say above gingiva. So that is the clinical crown. Similarly, what is the clinical root? It is that portion of the tooth that is not visible in the oral cavity, which is within the bone or within the gingiva, right? So whatever portion of the tooth is within it, within the bone, that is the clinical root. Now, what will happen in this case because of passive eruption? What will happen to, let's say, clinical crown is to clinical root. So what will happen to the ratio of clinical crown to clinical root upon passive eruption? तो passive eruption से clinical crown to clinical root के ratio पे क्या फर्क पड़ेगा? Now clinical crown, as I've just said, it is that portion of the tooth which is visible in oral cavity, and root is that portion which is not visible. So because of passive eruption, more of the part of tooth would be visible. So this clinical crown to clinical root ratio would increase upon passive eruption, right? But अगर क्वेश्चन में सिंपल सा दे रखा है what will happen to crown to root ratio, then it is clinical, that is not clinical, it is anatomic crown and root. तो anatomic crown and root में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, it won't change. It doesn't matter what portion of crown is within the gingiva or outside of the gingiva, वो रेशो सेम रहेगा, ठीक है? तो अगर सिर्फ क्राउन टू रूट रेशो पूछा है तो इट विल बी सेम. अगर क्लिनिकल क्राउन टू रूट रेशो आया तो दैट वुड इंक्रीज, राइट? क्योंकि क्लिनिकल क्राउन क्या है? दैट पोर्शन विच इज विजिबल अबव द जिंजाइवा, राइट? सो लेट्स गो टू अनदर टेबल. यहां पर हम कई बार क्वेश्चन आता है विच टूथ विल मोस्ट कॉमनली हैव टू कनाल्स और टू रूट्स, ठीक है? तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने एक टेबल बनाई है. क्लियर है? सो समटाइम्स दे विल आस्क यू which single rooted tooth most commonly show a bifurcation, या which single canal which most commonly show a bifurcation. तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? Now take a look here. All the anteriors in the maxilla, right, almost 100% of the times will have a single root, isn't it? Almost 100% of the times they will have a single root. इसमें भी central incisor जो है ये पूरा परफेक्ट है. It will almost always have a single root, right? But as we move posteriorly, as we move distally, first premolar, maxillary first premolar, we know it usually or it commonly has two canals, right? It commonly has two canals, right? Two canals. पर यहां पर हम क्या देख रहे हैं इस टेबल में? यहां पर हम देख रहे हैं roots, number of roots. So two canals can be present in one root, isn't it? ये ऐसा तो कोई नेसेसरी नहीं है कि दो कनाल है तो दो रूट भी होनी चाहिए. And that is the reason first premolar more than 50% of cases, in more than first 50% of cases has a single root. So it has two canals in single root most of the times, and sometimes it also has two roots. तो 46% cases में दो roots होंगी, 53% cases में single root होगी. After that, the second premolar it usually has a single root. So this is a single rooted tooth. But premolar, first premolar जो है, it almost 50% cases में two roots हैं, तो you won't call it a single rooted tooth, ठीक है? पर second premolar को हम single rooted कहेंगे क्योंकि 90% of the cases में single rooted है. Same for first and second molars. First and second molars के अंदर क्या होगा? Single root का मतलब that is a fusion. तो वहां पर single rooted बहुत ही कम होगा, two rooted भी बहुत कम होगा. Mostly it would be three roots. But if at all there is a fusion or if at all there is a convergence, there is a fusion between the roots, it will be more common towards the 8 as compared to 7 and least in 6, right? तो upper 6 के अंदर least होगा fusion और upper 8 के अंदर maximum fusion हो सकता है. That is why in most cases it has separate three roots as compared to the second molar. ठीक है? तो maxilla में तो which single rooted tooth would have the highest chance of a bifurcated root? It would be
it would be second premolar, isn't it? This is the single rooted tooth, isn't it? Molars तो single rooted है ही नहीं, तो क्वेश्चन से बाहर हो गए, right? So which single rooted tooth has maximum chances of bifurcated root? Amongst the anteriors and second premolar, these are the only four teeth in maxilla which are single rooted. First premolar का जैसे मैंने बताया, almost 50-50 cases of 1 and 2 roots, so that's why we don't consider it as a single rooted tooth. तो सिंगल रूटेड टूथ में फर्स्ट मोलर प्रीमोलर जो है दैट इज आउट, इसको तो बाहर ही कर दिया. तो बचे हमारे पास क्या, सेंट्रल इंसाइजर, लैटरल इंसाइजर, कनाइन और सेकंड प्रीमोलर. सो अमंग्स दीज फोर व्हिच विल हैव द हाईएस्ट चांस ऑफ बाइफरकेटेड रूट, इट वुड बी सेकंड प्रीमोलर, राइट? नाउ लेट्स गो टू द canals, number of canals. So as I just told you, in a single root, canal may bifurcate. So you can have two canals or maybe more in a single root, right? So maxillary central incisor still is the most perfect, right? The chances of a bifurcated canal are least in maxillary central incisor, as you can see here. It's just 0.8, right? So maxillary central incisor is the most perfect tooth as far as the root anatomy or the canal anatomy is concerned, right? It has the straightest, it has the most straight canal anatomy in entire dentition. तो हो सकता है ये पूछ लें आपसे कभी कि which tooth has the most straight canal anatomy, and that would be maxillary central incisor, right? Again यहाँ पर आपसे सवाल पूछ सकते हैं which extremely sorry, हमने mandibular root bifurcation नहीं पढ़ा. मैं mandible में ही बता देता हूं तुम्हें. The incisors in mandible, again, they have a almost 100% chance of a single root, except the mandibular central incisor sometimes shows bifurcation, right? It would sometimes show bifurcation. तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही single rooted रहेंगे. Mandibular central incisor may sometimes show bifurcation, and the lateral incisor may sometimes show bifurcation of the canal. भावना, यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनी वैल्यूज. ये वैल्यूज मैंने सिर्फ इसलिए लिखी है ताकि तुम यहाँ पर देख करके उन्हें कंपेयर कर सको. यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीज वैल्यूज. दीज वैल्यूज आर जस्ट सो दैट यू कैन कंपेयर, राइट? सो जैसे कि मैंने सवाल पूछा, विच सिंगल रूटेड टूथ विल मोस्ट कॉमनली शो बाइफरकेशन इन मैक्सिला. तो मैक्सिला में सिंगल रूटेड टूथ है ही 4, राइट? द इंटीरियर्स एंड द सेकंड प्रीमोलर, एंड इट इज द सेकंड प्रीमोलर व्हिच हैज द मैक्सिमम चांस ऑफ बाइफरकेशन इन मैक्सिला, राइट? तो आपका सिंपल सा है, याद रखना. यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीज नंबर्स 53.2 और 46.8 और 91.5. यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीज नंबर्स. जस्ट ये याद रखो कि कौन सा टूथ है जो कि बाइफरकेशन ज्यादा शो करता है, और मैक्सिला में एक ही है, दैट इज फर्स्ट प्रीमोलर, राइट? और कोई नहीं है. मैंडिबल में जब हम जाते हैं तो अगेन यहां पर सिंगल रूटेड टूथ 5 है हमारे पास इंस्टेड ऑफ 4, लाइक मैक्सिला. यहां पर बोथ प्रीमोलर्स एंड दी 3 एंटीरियर्स दे आर ऑल सिंगल रूटेड. तो यहां पर आपके पास कंपैरिजन के लिए 5 चीजें हो गई है. दैट्स द ओनली डिफरेंस, राइट? नाउ टेक ए लुक एट द परसेंटेजेस, राइट? टेक ए लुक एट द परसेंटेजेस. सो व्हिच टूथ do you think will show most commonly, which single rooted tooth which will most commonly show a bifurcated root? कौन सा सिंगल रूटेड टूथ मोस्ट कॉमनली बाइफरकेटेड रूट शो करेगा? एंड दैट वुड बी canine in the mandible, isn't it? बट ओवरऑल भी अगर हम बात करें, राइट? Which single rooted tooth most commonly shows bifurcation? Now let's say कि मैंने तुमसे कहा अपर फर्स्ट प्रीमोलर, अपर सेकेंड प्रीमोलर, लोअर फर्स्ट प्रीमोलर एंड लोअर canine. So what would be the correct answer here? Which single rooted tooth most commonly shows bifurcation? तो यहां पर आंसर क्या होगा इसका? अभी आपने वहां देखा वैल्यूज, जो वैल्यूज हैं दैट दे आर जस्ट फॉर यू टू remember or to make a sequence that which tooth will most commonly show a bifurcation, और अगर वो टूथ नहीं है तो फिर नेक्स्ट कौन है. दैट्स द ओनली थिंग. सो यहां पर हमारे पास आंसर क्या होगा? अपर
second premolar. Now, why didn't we go with upper 4? Because upper 4 is usually not considered a single rooted tooth. It is considered a bifurcated tooth or a tooth with two roots, right? So that's why we excluded upper 4, right? तो हमने क्या देखा? Upper 5 almost had a chance of 8.5% bifurcation, isn't it? Followed by lower 3, followed by lower 4, isn't it? तो अगर आपके पास ऑप्शंस बदल दिए जाते हैं, सेम क्वेश्चन but different options. Let's say now you have the options of lower 4, option B lower 2, option C upper 3, option D upper 1. Now what will be your answer here? What will be your answer here? अब कौन सा आंसर होगा कि कौन सा टूथ जो है which of these teeth will show maximum chances of bifurcated root. अब यहाँ पर bifurcated root के maximum chances किसके पास हैं? So now the answer would be option A, that is lower 4, right? So it depends on the options which answer you are going to select. Clear? तो हमारी sequence क्या हो गई? Upper 5 followed by lower 3 followed by lower 4. तो ये तीन दांत आपको ध्यान रखना, ठीक है? You need to remember these three teeth. That upper 5 followed by lower 3 followed by lower 4 has the maximum chances of bifurcation, right? So as you can see here, these are the frequencies with which two roots may be seen in these three teeth. Is it clear? So you don't need to remember all these values. Simple सा याद रखना है. Single rooted teeth होते ही बहुत कम है. Maxilla में 4 है, mandible में 5 है. In mandible, maximum chances of bifurcated root is in canine, followed by first premolar, followed by second premolar. और mandible में it is the first premolar. बाकी जो interiors हैं, they usually will not show any bifurcation, right? Now let's go to the canals, number of canals. ये थोड़ा सा ज़्यादा इसमें bifurcations वगैरह होती हैं, right? So as I just told you, the upper central incisor, it is the most perfect tooth, isn't it? यहाँ पर least chances of a bifurcated canal, सबसे कम bifurcation होती है यहाँ पर जैसे जैसे हम पीछे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम distally move करते हैं, वैसे वैसे bifurcation बढ़ती जाती है, right? तो lateral में थोड़ी ज्यादा है, canine में थोड़ी और ज्यादा है. First premolar, as we have discussed, the maxillary first premolar is considered a two-rooted tooth. So obviously it will more commonly have two canals. Two canals would be a common feature, and that is why two canals in maxillary first premolar are almost about 80% cases, right? So in 80% cases in upper first premolar you will have two canals, whereas in only 16% cases you will have single canal. तो single canal बहुत कम है, 80% cases में two canals है, तो it is a two-rooted tooth, isn't it? But in the second premolar, as you can see, it has increased to 46%. तो सेकेंड प्रीमोलर में 46% है. तो अगर आपसे पूछें कि बाइफरकेटेड कनाल मोस्ट कॉमनली किस सिंगल रूटेड टूथ में मिलेगी मैक्सिला के अंदर, राइट? अगर आपसे पूछें विच मैक्सिलरी टूथ विल मोस्ट commonly show a bifurcated canal, right? And the options are upper 4, upper 5, upper 2 and the upper 1. So what will be your answer? Which of these tooth will most commonly show a bifurcation in the canal? It will be upper 5. Upper 5 क्यों? Because upper 4 has two canals, right? It has two canals. That is the normal feature of this tooth, isn't it? Bifurcation, that is division of the single canal. Where is it taking place? It is taking place in the upper 5. Upper 4 में नहीं हो रहा है. Upper 4 तो normally ही two canal वाला है, right? It normally has two canals. But the upper 5, it will bifurcate in almost 46% cases. So upper 5 most commonly will show bifurcation.
इन अ सिंगल रूटेड टूथ, ठीक है, या वैसे भी इस तरीके से भी पूछे तो भी आप 5 को ही मार्क करोगे। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दी मैंडिबुलर टीथ। मैंडिबुलर टीथ में क्या हो रहा है? मैंडिबुलर टीथ के अंदर I've told you that the mandibular centers, they will show bifurcated root more commonly as compared to the other interiors or other incisors, but the mandibular lateral incisor will show a more commonly bifurcated canal as compared to other incisors. तो यहाँ पर 24.6% bifurcated canals हैं। तो which incisor commonly shows a bifurcated canal? तो which incisor shows a more commonly bifurcated canal? इसके अंदर upper 1, upper 2, lower 1 and lower 2. So what will be your answer here? अब bifurcated canal most commonly किसमें दिखेगी? हमें lower 2 के अंदर, that is 24.6% cases. तो हम यहाँ पर केवल एक सिंपल सा सीक्वेंस बना लेते हैं, lower 2 followed by lower 1 followed by upper 2 and 1, because upper 2 and 1 almost all the cases they have single canal, yet if you want, तो हमने पहले भी बोला था कि जैसे जैसे हम posteriorly move करेंगे वैसे वैसे number of canals बढ़ती हैं, तो you can have this sequence lower 2, lower 1, then upper 2, upper 1, right? Then there is the canine. In canines you have a lesser chance of bifurcation as compared to the incisors. So only in 9.5% cases you will have bifurcation, right? अब फर्स्ट प्रीमोलर और सेकंड प्रीमोलर की बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रीमोलर में देयर इज जस्ट 22% चांस ऑफ बाइफर्केशन ऑफ द कैनाल, whereas 8.7% चांसेस ऑफ बाइफर्केशन आर देयर इन द सेकंड प्रीमोलर। सो यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है, क्या? जब हमने रूट बाइफर्केशन की बात की थी, जब हमने रूट बाइफर्केशन की बात की थी तब हमने क्या कहा था? अपर सेकेंड प्रीमोलर, देन लोअर फर्स्ट प्रीमोलर, देन लोअर सेकेंड प्रीमोलर, दिस वाज द सीक्वेंस, राइट? बट जब हम कनाल्स की बात करते हैं तो यू कैन नोटिस दैट द लोअर लैटरल इंसाइजर इज बिफोर द लोअर प्रीमोलर। लोअर लैटरल इंसाइजर्स में chances of bifurcation are greater as compared to the lower premolar. तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे we will always take a note of what it is actually asking. Is it the bifurcation of root or the bifurcation of canal? अगर canal का bifurcation करना है तो lower lateral incisor में lower premolar से ज्यादा chances हैं bifurcation के, right? Is it clear? तो कनाल की अगर हम सीक्वेंस देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इट वुड बी अपर 4 फॉलोड बाय लोअर 2 फॉलोड बाय लोअर 4 एंड देन लोअर 5, राइट? तो सॉरी, अपर 5. सो रूट और कनाल, there is just one difference. In the roots the sequence is upper 5 lower 4 lower 5, and in canals it's upper 5 lower 2 lower 4 lower 5, right? So based on the options in your question you will select your answer, right? तो अगर यहां पर हम कहें कि let's change the question, which single rooted tooth has highest chances of a bifurcated canal? The options are upper 4, lower 2, lower 4 and lower 5. So what will be the answer in this case? हमारे पास अब मैक्सिलरी प्रीमोलर है, फर्स्ट प्रीमोलर, मैंडिबुलर लैटरल है, मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर एंड मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर. So which of these single rooted tooth will have highest chance of a bifurcated canal? And the answer here would be option B, that is lateral incisor. ठीक है, क्योंकि lateral incisor हमने पढ़ा है कि 24% ऑलमोस्ट
एंड लोअर 4 के अंदर देयर इज जस्ट 22%. सेम क्वेश्चन में अगर हम ऑप्शंस चेंज कर दें, लेट्स कीप इट एज अपर 4, लोअर 5 एंड अपर 2, देन व्हाट विल बी द आंसर? अब यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? अब यहां पर आंसर अगेन, क्योंकि सिंगल रूटेड टूथ की बात है, तो यहां पर आंसर फिर से क्या हो जाएगा? लोअर 4, क्योंकि अपर 4 इज ऑलरेडी रूल्ड आउट, क्योंकि ये 2 रूटेड टूथ कंसीडर किया जाता है. ठीक है, इसमें आप और भी कुछ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रिमेंबर द सीक्वेंस. तो सीक्वेंस बहुत सिंपल है. अगर हम बाइफरकेटेड रूट की बात कर रहे हैं, बाइफरकेटेड रूट, तो बाइफरकेटेड रूट में क्या है? अपर 5, लोअर 4, लोअर 5, और अगर हम कनाल की बात कर रहे हैं तो इसी के अंदर एक लैटरल इंसाइजर और ऐड हो जाएगा. दैट्स इट. तो सिंपल है, याद रखना है ना, बस ये सीक्वेंस याद रखनी है आपको, और कुछ नहीं. तो ये सीक्वेंस भी याद रखी, तो चाहे जो भी कॉम्बिनेशन आ जाए एमसीक्यूज का, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं फिर से और जस्ट फॉर रिवीजन से, which tooth will most frequently, let's say frequently, which tooth will most frequently show 2 canals? तो इसका क्या आंसर होगा? Which tooth will most frequently show 2 canals? ऑप्शन ए इज लोअर 4, सॉरी अपर 4, अपर 5, लोअर 2, लोअर 5. तो इसका हम थोड़ा बाद में आंसर करते हैं. ठीक है, थोड़ा सोचो इसके बारे में क्या आंसर हो सकता है, एंड देन विल कम बैक टू इट. राइट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज डेवलपमेंटल डिप्रेशन ऑन द रूट सरफेस. डेवलपमेंटल डिप्रेशन ऑन द रूट सरफेस. तो इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, एंड द क्वेश्चन वुड बी which depression or which developmental depression is deeper on maxillary central incisor maybe, right? And options more or less is same. Either it would be a mesial developmental depression or a distal developmental depression. ठीक है, जितने भी रूट्स हैं उन सब पर एक मीजियल और एक डिस्टल डेवलपमेंटल डिप्रेशन होगा या नहीं होगा, बट द ओनली लोकेशन दैट इज मीजियल एंड डिस्टल एक्सेप्ट फॉर द पैरेटल रूट ऑफ अपर मोलर्स वेयर देयर इज अ फेशियल डिप्रेशन. ठीक है, तो वो हम देखेंगे इस टेबल में. राइट, सो एज यू कैन सी in the central incisor, maxillary central incisor, it has most smooth root in maxilla. तो maxilla में सबसे smooth root किसकी होगी? upper central incisor की. right, developmental depressions are usually absent, and if at all they would be present on the mesial surface. तो mesial surface पे developmental depression जो है वो prominent होगा. जो क्वेश्चन हमने अभी लास्ट किया है, try to solve it. ठीक है, और अगर सॉल्व हो जाए तो प्लीज टेल मी द आंसर. बीच में आप बता सकते हैं उसका आंसर, है ना. लैटरल इंसाइजर की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होगा? लैटरल इंसाइजर इज एक्टली अपोजिट ऑफ सेंट्रल इंसाइजर, एंड नॉट जस्ट दिस लैटरल इंसाइजर बट द मैंडिबुलर इंसाइजर्स एज वेल. तो यहां पर हमने क्या देखा? मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर में तो मीजियल डिप्रेशन इज प्रोमिनेंट, लैटरल में डिस्टल डिप्रेशन इज प्रोमिनेंट, एंड सेम इज द केस विद मैंडिबुलर इंसाइजर्स. यहां पर भी डिस्टल डिप्रेशन जो है दैट इज प्रोमिनेंट. तो याद करने का जो है वो दैट इज ओनली दिस पोर्शन ऑफ द टेबल, कि कौन सा वाला डिप्रेशन ज्यादा प्रोमिनेंट है. ठीक है, सो अमंग्स द इंसाइजर इट इज ओनली द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर व्हिच मे हैव अ डिप्रेशन ऑन द मीजियल सरफेस. अपार्ट फ्रॉम मैक्सिलरी सेंट्रल, और द अदर इंसाइजर्स विल हैव अ डिस्टल प्रोमिनेंट डिप्रेशन. ठीक, canines, both the canines will have a distal prominent depression है, and it is more prominent on distal surface as you can see here. ठीक है, मैंडिबल में तो वैसे भी देखोगे तो डिस्टल डिप्रेशन ही प्रोमिनेंट है एक्सेप्ट फॉर द मोलर्स. तो मैंडिबल में इट इज वेरी सिंपल. डिस्टल डेवलपमेंटल डिप्रेशन इज प्रोमिनेंट इन इंसाइजर्स, कनाइन एंड प्रीमोलर्स. मोलर्स के अंदर मीजियल डेवलपमेंटल डिप्रेशन प्रोमिनेंट है. तो मैक्सिला में वापस आते हैं एक बार. ठीक है, फर्स्ट प्रीमोलर पे कई बार आपसे सवाल करते हैं. राइट, देयर इज अ डेवलपमेंटल ग्रूव ऑन द मीजियल मार्जिनल रिज, इजंट इट? देयर इज अ डेवलपमेंटल ग्रूव
on the mesial marginal ridge. तो यहाँ पर mesial marginal ridge है let's say, तो mesial marginal ridge पे हमेशा क्या होता है, एक developmental depression हो जाता है, right? There is a developmental depression on the mesial marginal ridge, and this developmental depression continues to the mesial depression on the crown, and from there, तो यहाँ पर भी एक depression होता है crown पे, and from there it is continuous on the root. This depression is continuous on the root. So the mesial depression is more prominent in the upper first premolar. Apart from this, all the premolars will have a distal prominent depression. तो एंटीरियर्स में केवल एक मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर है जिसमें मीजियल प्रोमिनेंट है. प्रीमोलर्स में केवल एक मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर है जिसमें मीजियल प्रोमिनेंट है. बाकी जितने भी प्रीमोलर्स हैं वहां सब जगह डिस्टल ही प्रोमिनेंट है, राइट? So in all the premolars, distal developmental depression is prominent except for maxillary first premolar. All the anteriors, distal developmental depression is prominent except for maxillary central incisor, right? अब हम molars की बात करते हैं. Molars में बहुत सिंपल है, mesial root और distal root. It is the mesial developmental depression that is more prominent, both in maxilla and in mandible. Always the mesial developmental depression is more prominent in the molars. तो ये बहुत ही सिंपल है ना? कुछ भी इसमें ज्यादा याद करने का नहीं है. तो जितने भी एंटीरियर्स हैं, डिस्टल is more prominent than mesial except upper central, and premolars again same, distal is more prominent than mesial except upper 4, and in all the molars mesial is more prominent than distal. So this is the simple breakdown of all these tables. ठीक है? तो all the depressions on the distal surface in anteriors are prominent except for upper one. अब palatal root जो है, palatal root in maxillary molars, it will have a facial depression. And yes Bhavna, the correct answer is option A, that is maxillary first premolar. क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विच टूथ विल मोस्ट फ्रीक्वेंटली शो टू कनाल्स. तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाइफर्केशन हो रहा है कनाल का या सिंगल रूटेड टूथ है, ऐसा कोई भी इसके अंदर ऑप्शन क्वेश्चन में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है. एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, दैट इज अपर 4, राइट? तो ये हुआ रूट पे डिप्रेशन. उसके अलावा मैंने सोचा कि कुछ हम कौन से टूथ जो है फ्रीक्वेंसी में कभी कभी पूछ लेते हैं कि किस डेवलपमेंटल डिप्रेशन में कौन सा, डेवलपमेंटल डिजीज में या डिफॉर्मेशन में कौन सा टूथ ज्यादा कॉमनली इन्वॉल्व है, या कौन सा फीचर किस टूथ के लिए यूनिक है. तो ये कुछ यूनिक फीचर्स हैं, राइट? सो दीज आर सम यूनिक फीचर्स. तो फर्स्ट वन इज लॉन्गेस्ट टूथ. तो लॉन्गेस्ट टूथ आई गेस इट्स क्वाइट सिंपल. Longest tooth में upper 3, that is upper canine, and upper canine has a total length of approximately 27 millimeters, 10 mm crown and 17 mm root, and it is because of this long root that it has a long that it is the longest tooth, isn't it? अगर हम crown length की बात करें तो which tooth has maximum crown length? Which tooth has maximum crown length? Then answer would be lower canine, followed by upper central, followed by upper canine. So lower canine has a crown length of 11 mm, upper central has a crown length of 10.5 mm, and upper canine has a crown length of 10 mm. So again these numbers may or may not be asked, but important क्या है कि मैक्सिला में मैक्सिमम क्राउन लेंथ किसकी है? सेंट्रल इंसाइजर की. और मैंडिबल में मैक्सिमम क्राउन लेंथ किसकी है? कनाइन की, राइट? सो कनाइन हैज मैक्सिमम क्राउन लेंथ इन ओवरऑल, राइट? ओवरऑल कनाइन, मैंडिबुलर कनाइन हैज मैक्सिमम क्राउन लेंथ, बट इन मैक्सिला मैक्सिमम क्राउन लेंथ इज ऑफ सेंट्रल, राइट? देन विच इज द लार्जेस्ट टूथ?
So largest tooth would be maxillary first molar. It has the largest volume. तो क्राउन का जो वॉल्यूम है दैट इज लार्जेस्ट इन मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर. टूथ का वॉल्यूम लार्जेस्ट है मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में. बट यहीं पर अगर हम मीजियोडिस्टल विड्थ की बात करें विच इज द वाइडेस्ट टूथ, then widest tooth would be lower first molar, right? Widest tooth would be lower first molar and largest tooth would be upper first molar. Third is most commonly congenitally missing tooth. तो congenitally missing tooth most common कौन सा होगा? It is the molars, third molars. So third molars are most commonly missing congenitally, right? And third molars may be lower third molar is more commonly missing as compared to the upper third molar. Is it clear? तो कंजेनाइटली मिसिंग टीथ की अगर हम बात करें तो लोअर थर्ड मोलर फॉलोड बाय अपर थर्ड मोलर. इसका रिवर्स कहां हो जाएगा? वेरिएबल एनाटमी के अंदर. तो वेरिएबल एनाटमी मोस्ट वेरिएबल एनाटमी वुड बी इन अपर थर्ड मोलर फॉलोड बाय लोअर थर्ड मोलर. अगर हम मोस्ट वेरिएबल एनाटमी की बात करेंगे तो अपर थर्ड मोलर फॉलोड बाय लोअर थर्ड मोलर, राइट? वेरिएबल एनाटमी के अंदर ही और क्या आ जाएगा? और कौन से दांत है जिनका वेरिएबल एनाटमी होगा? अपर लैटरल इंसाइजर. सो आफ्टर थर्ड मोलर्स इट वुड बी अपर लैटरल इंसाइजर. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो अपर थर्ड मोलर के बाद लोअर थर्ड मोलर and then lateral incisor. This has the most variable crown anatomy, right? Then the longest root. So which tooth has the longest root or the largest root in human dentition? So both longest and largest root are maxillary canines. So this is not just the longest, but it is also the largest. This is also the largest root. Similarly, in the mandibular arch, it is the mandibular canine which has longest and largest root. तो मैंडिबुलर कनाइन की रूट लेंथ इससे बस 1 mm ही छोटी है, दैट इज 16 millimeters, राइट? मैंडिबुलर कनाइन हैज अ रूट लेंथ ऑफ 16 millimeters and maxillary canine has a root length of 17 millimeters, right? So next question, tooth with most cusps. So which tooth has maximum number of cusps? तो maximum number of cusps lower 6 में होंगे या अपर 6 में होंगे? इसमें होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ cusps. Now both of these have 5 cusps, right? But you have to mark just one of them. So which will you go with? So I would go with the tooth which has maximum numbers of functional cusp, right? Upper 6 has a non-functional cusp, and this non-functional cusp is the 5th cusp. That is cusp of Carabelli. So apart from it, it has just 4 functional cusps. But in lower 6, you have all 5 functional cusps, isn't it? So when you are asked which tooth has maximum number of cusps, it will be lower first molar, right? It will be lower first molar. So mandibular first molar has the maximum number of functional cusps, and it is 5, right? Most prominent cingulum, ये हमने डिस्कस किया है. मैक्सिमम मोस्ट प्रोमिनेंट सिंगुलम किसका होगा? कनाइंस का. और अगर हम इंसाइजर्स की बात करें तो अपर लैटरल इंसाइजर, राइट? सो canines will have the maxillary canine has most prominent cingulum, and amongst incisors, अगर हम incisors की बात कर रहे हैं तो maxillary lateral incisor has the most prominent cingulum, right? क्या ये समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स रूट कनाल सिस्टम. तो रूट कनाल सिस्टम जहां पर मैक्सिमम बाइफर्केशंस और ट्राइफर्केशंस हमको देखने को मिलेंगे. मैक्सिमम डिवीजन ऑफ रूट कनाल वुड बी सीन इन विच टूथ? सो मैक्सिमम डिविजन्स इन अ रूट कनाल वुड बी सीन इन मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर. तो मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर हैज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कनाल एनाटमी, राइट? सो कनाल सिस्टम जो है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कहाँ है? मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर में. एंड वाइडेस्ट इंटीरियर टूथ मीजियोडिस्टली, ये तो आसान है ना? वाइडेस्ट इंटीरियर टूथ मीजियोडिस्टल, दैट इज सेंट्रल इंसाइजर. अगर एंटायर डेंटिशन की बात करेंगे तो मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया, राइट? सो वाइडेस्ट टूथ इंटीरियर
मीजियोडिस्टली वाइडेस्ट किसका कौन सा होगा? मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर का। ओवरऑल अगर हम देखें तो मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर का, राइट। सो मीजियोडिस्टली वाइडेस्ट इंटीरियर टूथ इज अपर सेंट्रल एंड ओवरऑल इट इज लोअर फर्स्ट मोलर। क्लियर है? और अगर हम वही नैरोएस्ट की बात करेंगे तो नैरोएस्ट में लोअर सेंट्रल इंसाइजर, ठीक है। नैरोएस्ट टूथ मीजियोडिस्टली इज द लोअर सेंट्रल इंसाइजर और द स्मॉलेस्ट टूथ इज द लोअर सेंट्रल इंसाइजर। अगर हम शॉर्टेस्ट टूथ की बात करें, विच इज द शॉर्टेस्ट टूथ, शॉर्टेस्ट मीन्स apico-occlusal dimension is least in which tooth? So apico-occlusal dimension is least in which tooth? It has to be third molar, right? It has to be third molar. तो third molar कौन सा होगा? Mandibular third molar और maxillary third molar? And the answer would be maxillary third molar. So maxillary third molar is the shortest tooth. यानी कि apico-occlusal dimension is least in maxillary third molar, right? एक स्पेशल टर्म है Tome's root. So what is Tome's root? What is Tome's root? So Tome's root is nothing but it is an extra root. तो Tome's root क्या है? Lingual root in lower first premolar. So अगर root का bifurcation हो जाए lower first premolar की, तो then the lingual root is known as Tome's root, right? So if there is a bifurcation in the lower first premolar, the lingual root would be called Tome's root. Most caries prone tooth. Sometimes this question has been asked. So most caries prone tooth कौन सा होता है? Mandibular first molar. This is in the permanent dentition. But what about the primary dentition? What about the primary dentition? Which is the most caries prone tooth in primary dentition? तो primary dentition में सबसे caries prone tooth जो है, those are the mandibular second molars. In permanent dentition they are first molars, ठीक है। तो permanent dentition में तो first molar है और primary dentition में mandibular second molar है। Most caries prone tooth. Is it clear? So based on this information, can you tell me which tooth will most commonly show Turner's hypoplasia because of caries? Which tooth will most commonly show Turner's hypoplasia due to caries? Most caries prone में बेटा परमानेंट डेंटिशन में फर्स्ट मोलर और प्राइमरी डेंटिशन में सेकेंड मैंडिबुलर मोलर, राइट। परमानेंट डेंटिशन में फर्स्ट मैंडिबुलर मोलर और प्राइमरी डेंटिशन में सेकेंड मैंडिबुलर मोलर। इन प्राइमरी सेकेंड मैंडिबुलर मोलर, राइट। So based on this information, एक क्वेश्चन है कि which tooth will most commonly show Turner's hypoplasia due to caries? अगर हम ऑप्शंस दें तो what would be the answer here? यहाँ पर क्या आंसर होगा? Most caries prone, which tooth is most likely to show Turner's hypoplasia due to caries? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Now since lower second premolar, lower second mandibular primary molar is most commonly affected by caries, the lower second premolar will most commonly exhibit Turner's hypoplasia. Clear है? Turner's hypoplasia due to caries would be most commonly seen in mandibular second premolar. क्यों? क्योंकि caries most commonly lower second deciduous molar में है, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ और डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स
और उनके साथ एसोसिएटेड टीथ। तो डेंस इन्वेजिनेटस और डेंस इंडेंटे, राइट, डेंस इन्वेजिनेटस और डेंस इंडेंटे मोस्ट कॉमनली कहाँ दिखेंगे हमें? मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर फॉलोड बाय मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ये आपको नोट करना है तो नोट कर लो, नहीं तो ये मैं डॉक्यूमेंट वैसे भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, सो डेंस इन्वेजिनेटस इज मोस्ट कॉमनली सीन इन मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर। अब डेंस इवेजिनेटस जो है वो कहां पर देखने को मिलेगा? डेंस इवेजिनेटस हमें कहां देखने को मिलता है? प्रीमोलर्स में, मैंडिबुलर प्रीमोलर्स में। तो इन्वेजिनेटस इन मैक्सिलरी एंटीरियर्स, इवेजिनेटस इन मैंडिबुलर पोस्टीरियर्स। तो मैंडिबुलर सेकेंड प्रीमोलर में इवेजिनेटस मोस्ट कॉमन होगा फॉलोड बाय फर्स्ट प्रीमोलर, राइट। तो इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। इवेजिनेटस किसमें मिलेगा? नाउ अ फॉर्म ऑफ इवेजिनेटस, डेंस इवेजिनेटस इज टैलेंस कस्प, राइट। तो टैलेंस कस्प इज आल्सो सिमिलर, एक्सेसरी कस्प। ये सब ब्रॉड हेडिंग में एक्सेसरी कस्प में आते हैं, चाहे इवेजिनेटस हो, टैलेंस कस्प हो, कस्प ऑफ कैरिबली हो, दे आर ऑल एक्सेसरी कस्प। और ट्यूबरकल्स, तो another tubercle or accessory cusp, that is talus cusp. Where is it more commonly seen? It is most commonly seen on maxillary lateral incisor, isn't it? Followed by maxillary central incisor. तो anteriors में ही ज्यादा है, मतलब ये सब कुछ लिखा हुआ है ना, ठीक है। Talus cusp, maxillary lateral incisor, right? Now similarly enamel pearl, enamel pearl हमें commonly कहाँ देखने को मिलेगा? enamel pearl maxillary molars में, तो थर्ड मोलर, फिर सेकंड मोलर, फिर मैंडिबुलर मोलर। तो ये सीक्वेंसेस की, तो यूजुअली आपसे ये पूछेंगे मोस्ट कॉमनली कहाँ देखने को मिलेगा? इट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन मैक्सिलरी थर्ड मोलर्स। फिर टोरोडोंटिज्म, टोरोडोंटिज्म परमानेंट मोलर से मोर कॉमनली मिलता है, उसमें भी मैंडिबल में ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू मैक्सिला, isn't it? So taurodontism is more commonly seen in mandibular molars followed by maxillary molars. And there is the question of dilaceration. So dilaceration क्या है? Dilaceration is nothing but the sharp bend in the root, right? There is a sharp bend in the root. तो ये जो sharp bend है रूट के अंदर, इसको हम dilaceration कह रहे हैं, और ये मोस्ट कॉमनली हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? Maxillary incisors में। Now why is it more common in maxillary incisors? Because this is the more trauma prone region, isn't it? The interior is the more trauma prone region. तो dilaceration होता ही क्या है? उसका main etiology क्या है? Trauma. तो maxillary interiors are more trauma prone, isn't it? That is why dilaceration is most frequently seen in upper interiors or maxillary incisors. उसमें भी central incisor is more commonly affected. तो central incisor followed by lateral incisor, that is the frequency, isn't it? और उसके बाद एकदम से हमने क्या देखा? मैंडिबुलर मोलर्स में बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पेस। तो थर्ड मोलर जो है मैंडिबुलर थर्ड मोलर, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस इट विल आल्सो शो डायलेसरेशन। और इसमें भी डायलेसरेशन जब होता है तो इट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली लिंगुअल फॉलोड बाय लेबियल और बक्कल। So lingual dilacerated roots are more commonly seen as compared to the buccal dilacerated root. Right? फिर एक maxillary second premolar भी है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इतना कुछ याद रख लें वही बहुत है। Upper central, upper lateral, followed by maxillary third molar. Maxillary third molar में भी dilaceration, lingual dilaceration is more common as compared to the buccal dilaceration. Now when you see a lingual dilaceration in an IOPA or a buccal dilaceration on an IOPA, what would you see? Because the root is bent, isn't it? The root is bent like this and you have a canal, isn't it? You have the canal here opening at the apex. तो जब हम इसे एक्सरे में देखेंगे, जब हम इसे IOPA में देखेंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? We will see this apex. We will see this apex, and in the center of the apex we will see a apical foramen. तो इस appearance को क्या कहते हैं? What is this appearance called? Can anyone tell me what this appearance is called?
This appearance is called bullseye or target appearance, isn't it? या तो हम इसे bullseye appearance भी कह सकते हैं या हम इसे target appearance भी कह सकते हैं. Is it clear? हाँ, very good. तो bullseye appearance अगर दिख रही है mandibular थर्ड मोलर के IUPA पर, तो मोस्ट कॉमनली डायलेसरेशन कौन सा होगा? It would be a lingual dilaceration, isn't it? Why? Because anyway, lingual dilaceration is more common as compared to the buccal dilaceration, right? Frequency किसकी ज्यादा है? Lingual dilaceration. जब bullseye दिख रही है तो हम क्या कहेंगे? Most probably there is a chance that it is a lingual dilaceration. ठीक है? तो कभी कभी हम पढ़ते हैं कि lingually impacted tooth shows a bullseye appearance, right? Lingually impacted tooth shows a bullseye appearance. Now, what is a lingually impacted tooth? This most probably is a lingually impacted tooth, isn't it? Lingual plate, buccal plate. Lingual plate or buccal plate ये हो गई. So this is a lingually impacted tooth where the crown has tilted towards the lingual side. Now tell me please, if I place an X-ray film here, if I place an X-ray film here, right? If I place an IOPA film here, will I get this same appearance? If I place a IOPA film, if I take an IOPA radiograph of this lingually impacted tooth, will I get this same appearance? Do you think I will get the same appearance? Do you think I'll get the same appearance if there is a lingually impacted tooth? Or do you think we will get something different on the IOPA? Do you think we'll get something like this? Something like this. Where we'll be able to see the cusps, right? Because they have thicker enamel. So cusps would be visible as more whiter, right? As compared to the central groove or the other grooves, which will appear a bit darker. ठीक है, तो grooves वगैरह तो सब dark appear हो रहे होंगे, और cusps जो है वहां पर enamel thick है, तो it will appear relatively whiter, right? तो हमें कुछ ऐसी appearance दिखेगी जहां पर हमें cusps तो दिखेंगे white और बीच में central groove दिखेगा हमें black. So do you think this appearance can be described as bullseye appearance? Do you think this can be described as a bullseye appearance? अभी कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, तो either you are confused or you are scared to answer. क्या चक्कर है? जो दिख रहा है वो सच है कि नहीं? जो दिख रहा है वो सही है. अगर हमने देखा है कि ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब वो सही है ना, राइट? तो बुलजाई अपीयरेंस ज्यादा हमें कहां देखने को मिलेगी? लिंगुअल इंपैक्शन में या लिंगुअल डायलैसरेशन में? वेयर इज बुलजाई अपीयरेंस मोर कॉमनली मोर फ्रीक्वेंटली सीन, या वेयर इज इट सीन? इन लिंगुअल डायलैसरेशन और लिंगुअल इंपैक्शन? कहां दिखेगा? लिंगुअल डायलैसरेशन के अंदर हमें बुलजाई अपीयरेंस दिखेगा, राइट, एज कंपेयर टू द लिंगुअल इंपैक्शन. लिंगुअल इंपैक्शन में हमें मोर और लेस ये वाला अपीयरेंस दिखेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नो वन इज आंसरिंग. क्या हो गया है? फिर हम चलते हैं कॉन्क्रेसेंस के अंदर. व्हाट इज कॉन्क्रेसेंस? कॉन्क्रेसेंस इज नथिंग बट द फ्यूजन ऑफ एडजेसेंट रूट्स बाय सीमेंटम. तो सीमेंटम से एडजेसेंट रूट्स के फ्यूजन को हम कॉन्क्रेसेंस कहते हैं. तो मोस्ट कॉमनली इसमें कौन अफेक्टेड होगा? मोस्ट कॉमनली इसके अंदर मैक्सिलरी मोलर्स अफेक्टेड होंगे. ठीक है, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर, फॉलोड बाय मैंडिबुलर मोलर्स, व्हिच इज अ रेयर अकरेंस. तो मैक्सिला में ज्यादा कॉमन हमें देखने को मिलता है कॉन्क्रेसेंस, राइट? मेरे ख्याल से बुलजाई वाला कंसेप्ट डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना? जेमिनेशन. तो यू टेल मी भावना, व्हाई डायलाइजेशन ओनली? ये दोनों सेम पिक्चर दिख रही क्या? कंपेयर दीज टू पिक्चर्स एंड टेल मी, आर दे सेम?
वेयर इज द बुलजाई हियर? यहां पर कहां है बुलजाई? प्लीज टेल मी, वेयर इज द बुलजाई इन लिंगुअल इम्पैक्शन? यहाँ बुलजाई कहां है लिंगुअल इम्पैक्शन के अंदर? है क्या कहीं? बताओ, खुद ही बताओ। तो कई बार क्या होता है कि कोई गलत चीज, कोई गलत कंसेप्ट बन जाता है और बुक्स उसी को लगातार पब्लिश करती रहती हैं। इवन व्हेन यू विल स्टडी दी पल्स, तो पल्स में कौन सा सब्जेक्ट होगा? मे बी इट वुड बी इन ओरल सर्जरी, राइट? व्हेन यू गो टू ओरल सर्जरी, you would see that they have marked it as lingual impaction and they have given no reference. There is no reference for this. You will never find any reference for buccal, for bullseye appearance in lingual impaction. तो lingual impaction का appearance on IOPA as bullseye, ये reference pulse में भी नहीं है और कहीं भी मेरे को नहीं लगता मिलेगी तुम्हें, ठीक है? बिकॉज इट डज नॉट अपीयर लाइक अ बुलजाई, है ना? बुलजाई की जैसी लगी नहीं रही, आप देख ही रहे हो। ये अपीयरेंस क्या है? यहाँ पर सब तरफ हमें कस्प्स हैं, दे विल ऑल अपीयर वाइट, मार्जिनल रिज विल अपीयर वाइट, एंड इन द सेंटर यू हैव अ स्लिम ग्रूव, राइट? You have a slim groove, and this groove, it will appear a bit dark, right? These grooves will appear a bit dark. So do you think these grooves and these cusps, they will make a bullseye appearance? नहीं, isn't it? तो bullseye appearance हमें यहाँ पर तो नहीं मिलेगी। bullseye appearance हमें कहाँ मिलेगी? जहां पर रूट बेंड हो रही, जैसा कि मैंने बताया अभी कंसेप्ट है ना। तो चारों तरफ तो क्या है? कैल्सिफिकेशन, देयर इज कैल्सिफिकेशन ऑल अराउंड, एंड देयर इज द सेंट्रल पोर्शन विच इज अनकैल्सिफाइड, क्योंकि पल्प है वो। तो दोनों में स्टार्क डिफरेंस दिखेगा, इजंट इट? देयर वुड बी स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पेरिफेरी, दैट्स व्हाई इट इज अ बुलजाई अपीयरेंस। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इजंट इट? अगर कस्प के ऊपर 2.5 mm इनामल है, तो ग्रूव्स में भी अप्रोक्सीमेटली 1.5 mm इनामल तो है ही है। So there would be slight difference, but not that much of a difference. कोई बात नहीं भावना, अगर कंसेप्ट हमारे स्ट्रॉन्ग है तो हमें मार्क्स स्कोर करने में आसानी होगी, है ना? जेमिनेशन, तो जेमिनेशन मैंने क्या बताया, क्या है जेमिनेशन? स्प्लिटिंग ऑफ टूथ, ठीक है? तो देयर वाज अ सिंगल टूथ and it decided to split. So this split could be either partial. This split could be either partial or it could be complete, right? This split could be partial or complete. तो जेमिनेशन जो है वो मोस्ट कॉमनली कहां दिखेगा? जेमिनेशन मोस्ट कॉमनली वहां दिखेगा जहां ट्रॉमा ज्यादा है, प्राइमरी मैक्सिलरी इंसाइजर्स। तो ट्रॉमा में ही हमें डायलैसरेशन ज्यादा दिख रहा था, ट्रॉमा में ही हमें जैमिनेशन ज्यादा दिख रहा है, ठीक है? फॉलोड बाय परमानेंट मैक्सिलरी इंसाइजर्स एंड मैंडिबुलर इंसाइजर्स। तो प्राइमरी इंसाइजर्स फॉलोड बाय परमानेंट इंसाइजर्स, मैक्सिलरी फॉलोड बाय मैंडिबुलर इंसाइजर्स। तो ये पूरा रीजन कैसा है? ट्रॉमा प्रोन, राइट? नेक्स्ट फ्यूजन है। फ्यूजन हमें कहां देखने को ज्यादा मिलेगा? अगेन, अगर वो प्राइमरी मैक्सिलरी इंसाइजर्स में ज्यादा था, तो फ्यूजन मैंडिबुलर इंसाइजर्स में ज्यादा है, ठीक है? तो कभी कभी हम जब डिफरेंशिएट करते हैं फ्यूजन और जेमिनेशन के बीच में, तो एनाटॉमिक साइट भी हेल्पफुल होती है। अगर मैक्सिला में दिख रहा है तो इट इज मोस्ट प्रोबेबली जेमिनेशन, एंड इफ इट इज सीन इन मैंडिबल इट इज मोस्ट प्रोबेबली फ्यूजन, राइट? सो फ्यूजन इज मोर कॉमन इन मैंडिबुलर इंसाइजर्स, दैट टू इन प्राइमरी इंसाइजर्स। जेमिनेशन मोर कॉमन इन मैक्सिलरी इंसाइजर, दैट टू इन प्राइमरी इंसाइजर्स। समझ गए? तो उल्टा हो गया वहां पर, मैक्सिलरी इंसाइजर मोर कॉमन, मैंडिबुलर इंसाइजर लेस कॉमन। यहां पर क्या हो गया? मैंडिबुलर इंसाइजर मोर कॉमन, मैक्सिलरी इंसाइजर लेस कॉमन, राइट? देन देयर इज माइक्रोडोंशिया। तो माइक्रोडोंशिया में क्या होगा? दांत यूजुअल से छोटे हो जाएंगे, दैट इज माइक्रोडोंशिया। तो माइक्रोडोंशिया में पेरिलेटरल्स हमने बहुत कॉमनली सुना है टर्म, राइट? सो माइक्रोडोंशिया मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स, isolated microdontia most commonly affects maxillary lateral incisor, followed by third molars, followed by maxillary second premolar. तो माइक्रोडोंशिया किसको सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा? आगे lateral incisor को, फिर पीछे थर्ड मोलर्स, और फिर उसके बाद maxillary second molars। और मैक्रोडोंशिया उल्टा हो जाएगा,
माइक्रोडोंटिया में एंटीरियर्स कॉमनली अफेक्टेड थे, मैक्रोडोंटिया में पोस्टीरियर्स यानी कि मोलर्स, राइट. सो मैंडिबुलर मोलर्स वुड बी मोर कॉमनली अफेक्टेड, फॉलोड बाय इंसाइजर्स. अब सुपर न्यूमरी टूथ हमने पढ़ा है, बहुत कॉमन है ना. मीजियोडेंस. मीजियोडेंस इज द मोस्ट कॉमन सुपर न्यूमरी टूथ, इजंट इट. तो मीजियोडेंस कहां पर मिलता है? मैक्सिलरी इंसाइजर रीजन में. सो दैट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सुपर न्यूमरी टूथ, फॉलोड बाय मैक्सिलरी. तो मैक्सिलरी में डिस्टोमोलर भी हो सकता है, पैरामोलर भी हो सकता है, बट ज्यादा कॉमन कौन होगा? ज्यादा कॉमन होगा डिस्टोमोलर. सो दैट वुड बी अ फोर्थ मोलर. क्या हो जाएगा वो? फोर्थ मोलर. ठीक है. तो मैक्सिलरी फोर्थ मोलर इज मोर कॉमन देन दी पैरामोलर. तो पैरामोलर क्या होता है? लेट्स से दिस इज द मोलर, ठीक है, दिस इज द सेकंड मोलर, दिस इज द फर्स्ट मोलर. सो इफ यू हैव अ टूथ behind the third molar, that is the distomolar. But if you have a tooth buccal or lingual to the third molar, that would be paramolar. Is it clear? तो ये तो पैरामोलर हो गया. और डिस्टोमोलर, तो पैरा और डिस्टो में कौन कॉमन है? डिस्टोमोलर ज्यादा कॉमन है, ठीक. Then there is hypodontia. Hypodontia means congenitally missing teeth but less than 6. तो 6 से कम हो तो हाइपोडोंशिया, 6 या 6 से ज्यादा हो तो ओलिगोडोंशिया. तो हाइपोडोंशिया किसको ज्यादा इफेक्ट करेंगे? थर्ड मोलर्स को. थर्ड मोलर्स में भी किसको हमने पीछे भी पढ़ा है, मोस्ट कॉमनली मिसिंग टूथ कौन सा होता है? मैंडिबुलर थर्ड मोलर फॉलोड बाय मैक्सिलरी थर्ड मोलर, इजंट इट. उसके बाद मैंडिबुलर प्रीमोलर्स एंड देन मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर्स. तो ये कॉमन सीक्वेंस है. ये चीज याद रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता. फोर्थ पॉइंट है ना. तो 3 पॉइंट्स जो है एटलीस्ट लोअर थर्ड मोलर, अपर थर्ड मोलर एंड देन मैक्सिलरी मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर और मैक्सिलरी लैटरल्स, इतना भी याद रहे तो बहुत है. देन हाइपरसीमेंटोसिस. हाइपरसीमेंटोसिस क्या होता है? ये नॉर्मल रूट है, इसके ऊपर नॉर्मल सा अपना थोड़ा थोड़ा सा हमारा सीमेंटम था, बट देन व्हाट हैपेंड? दिस सीमेंटम डिसाइडेड टू बी थिक, इट डिसाइडेड टू प्रोलिफरेट. तो ये हो गया हाइपरसीमेंटोसिस. तो हाइपरसीमेंटोसिस कहां ज्यादा दिखता है? मैंडिबुलर मोलर्स में ज्यादा दिखता है, ठीक है. सिंपल सा है. मैंडिबुलर मोलर्स में फॉलोड बाय मैक्सिलरी मोलर्स में. तो पोस्टीरियर्स में ही हमें हाइपरसीमेंटोसिस ज्यादा दिखेगा, चाहे वो मोलर्स हो चाहे प्रीमोलर्स हो. तो मैंडिबुलर मोलर, मैक्सिलरी मोलर एंड देन प्रीमोलर्स, यहाँ पर आपको हाइपरसीमेंटोसिस दिखेगा, ठीक है. टर्नर्स हाइपोप्लेजिया हमने पीछे भी बात की. टर्नर्स हाइपोप्लेजिया ड्यू टू केरीज एंड टर्नर्स हाइपोप्लेजिया ड्यू टू ट्रॉमा. ये दो वजह हो सकती है. तो टर्नर्स हाइपोप्लेजिया केरीज से भी होता है यानी इन्फेक्शन से भी होगा, और टर्नर्स हाइपोप्लेजिया ट्रॉमा से भी होगा. तो बिकॉज ऑफ केरीज इट विल बी मोस्ट कॉमनली सीन इन मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर. क्यों? क्योंकि मैंडिबुलर प्राइमरी सेकंड मोलर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय केरीज है, इसीलिए ही ये केरीज की वजह से टर्नर्स हाइपोप्लेजिया मोस्ट कॉमनली मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर में मिलेगा. और ट्रॉमा की वजह से most commonly it would be seen in maxillary central incisor. So depending on the question you will choose your option. तो अगर क्वेश्चन कह रहा है कि which tooth will most commonly show turner hypoplasia due to trauma, then the answer would be maxillary central incisor. But if the question says which tooth will most frequently exhibit turner's hypoplasia due to caries, then the answer would be mandibular second premolar. ठीक है. Then next is Hutchinson's incisors और Mulberry molar. तो हचिनसन इंसाइजर का हो या मलबरी मोलर का हो, एक ही बात है. कंजेनाइटल सिफिलिस में दिखता है, इसमें नाम से ही पता चल रहा है इंसाइजर एंड मोलर. तो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर एंड फर्स्ट परमानेंट मोलर्स, दीज विल बी अफेक्टेड. तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, सिंपल है, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है. अगर आपसे कोई पूछे कि विच टूथ इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड बाय डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स, सिंपल, कोई पर्टिकुलर डिफेक्ट नहीं. if they just ask you which tooth is most frequently involved in all of the developmental defects, then the answer would be maxillary lateral incisor. जो maxillary lateral incisor, this is involved in maximum developmental defects, ठीक है. सबसे ज्यादा यही इन्वॉल्व होता है, followed by third molars, followed by mandibular second premolar. तो ये तीन दांत हैं which are most frequently involved in developmental defects. Is it clear? कुछ पूछना है किसी को? कुछ पूछना है किसी को?
डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग, या हम बस करें हम? थैंक यू। तो कल मिलते हैं डेंटल हिस्टोलॉजी के साथ, एंड आई ट्राई टू गेट सम हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स, ताकि हम उसे देख करके डिफरेंट सेल्स को आइडेंटिफाई करना सीखें। तो मैं ओरल पैथोलॉजी में भी काम आ जाएगा थोड़ा बहुत, है ना? सो लेट्स होप वी गेट सम गुड डायग्राम्स फॉर टुमारो। चलो, if you want to ask anything you can ask, or okay, then we'll meet tomorrow, right? Good night.